So hi and welcome back to this another episode of me, Arshi. I hope you guys are doing good, and we are back with another episode. And I think all these episodes made me also learn a lot of things. I think मैंने कल भी 3 interviews लिए हैं, and हर interview से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. Being somebody who's taking interview, and obviously ये interviews aspirants को भी काफी ज़्यादा help करते हैं. Not only at the time of selection, आपको थोड़ा सा college के बारे में idea होता है, but college के अलावा हर स्टूडेंट एस्पायर कर रहा है टू गेट इनटू ऑल दीज टॉप कॉलेजेस बिकॉज ही वांट्स और शी वांट्स टू गेट इनटू अ गुड कंपनी, अ गुड प्लेसमेंट. सो आई थिंक वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस एपिसोड में. सो टुडे आई हैव उत्कर्ष भारद्वाज विद मी. Before starting my question, I just had a rapid question round prior to this session. So मेरे तो questions ready हैं, and I feel like definitely जो भी questions मैंने prepare किए हैं वो सारे questions आपके भी दिमाग में जो question आ रहे होंगे उनको sort out करेंगे. But उससे पहले Utkarsh, please give a brief about yourself. I think you did your engineering, then how MBA you decided कि अच्छा मुझे MBA करने जाना चाहिए, and how was your journey? Please introduce yourself. Sure. So thank you so much for inviting me here. It's an honor to be here. So currently I'm working as a management consultant at Deloitte, Southeast Asia. I'm based out of Kuala Lumpur in Malaysia. As ma'am mentioned already, I have done my MBA from SP Jain Institute of Management and Research, 2022 to 2024 batch. And prior to that, I used to work with Deloitte US India as a technology consultant. I worked there for 3 years. And I have done my BTech from KIIT in Bhubaneswar in computer science and engineering. So that's my entire profile. And I also had a very small stint at Accenture Strategy during my internship, MBA internship. So that's about my profile. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इंजीनियरिंग की वैसे तो MBA में we have भर के इंजीनियर्स, that's one thing, but you was already working with a good firm. कंसल्टिंग जो है वो हर स्टूडेंट का ड्रीम प्रोफाइल होता है, इवन MBA के बाद भी. एंड आप ऑलरेडी 3 साल यू वर्क विद Deloitte, राइट? तो आपके पास ऑप्शन था, आप चाहते तो स्विच कर सकते थे और दूसरी कंसल्टिंग फर्म में. तो 3 साल काम करने के बाद व्हाट मेड यू थिंक कि मुझे MBA करने जाना चाहिए? सो मैम, MBA करने का प्लान 3 साल काम करने के बाद नहीं आया था. MBA करने का प्लान BTech के बाद ही था. वर्सेस लुकिंग फॉर द राइट एग्जिट फॉर माई सेल्फ. Right, ma'am. So 3 साल मैंने इसीलिए काम किया because I wanted to have some good amount of experience which I could showcase in my campus placements as well. But MBA करने का plan BTech के बाद ही था, ma'am. And why I did not stick with my role at Deloitte Consulting, because it was primarily focused on technology. क्योंकि मैं engineer था, मैं computer science engineer, so it was completely technology based role. I wanted to have a client-facing role as well, जिसमें मैं client से interact करूँ, business requirements समझूँ, and then उसको एक problem में translate करूँ, either by a strategy or technology implementation, whatever it be. So वो access मेरे पास नहीं था pre my MBA, before my MBA. Right, so post my MBA I got this opportunity, and ये एक reason था जो मुझे push किया था for an MBA. Second thing, ma'am, एक engineer की जो reach है, that is very limited to whatever they know, the branch that they know. In an MBA, you get to learn about different functions as well, which is primarily finance, operations, marketing and sales, right? And my technology background as well. So ये एक और enabler था जो इसने मुझे push किया था to get into MBA. So ये primarily मेरे reason थे MBA करने के बाद. मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है उत्कर्ष कि I think you specified that you scored 770 in GMAT, जो कि कम स्कोर नहीं है. Then CAT का percentile was also 98 percentile, 22 में, वो भी कम percentile नहीं है. तो managing, because obviously talking about all these companies, हम online पढ़ते हैं that कितना hectic schedule होता है. So how you was able to manage your work life and also preparing simultaneously for all these exams? Ma'am, it took me a while actually. It did not happen in 1 day or 1 year, to be honest. It took me 3-4 attempts. I took CAT 4 times. Started with a 94 percentile, gradually moved to 96, then 97, and in my last attempt it was 98 percentile. So I took CAT 4 times to reach there. It took me an enormous number of hours because I had to juggle between my work and काम के साथ, दोनों साथ में करना था. तो ये एक था कि मुझे टाइम लगा, मैम, मुझे 4 साल लगे टू गेट माई डिजायर्ड स्कोर. इवन GMAT ऑल्सो आई टुक 2 attempts. My first attempt was 720, and then I again prepared for it, and
fortunately I got a 770 as well. So one thing it was कि मुझे एक बार में इतना score नहीं आया. It took me multiple attempts. And the thing is, I kept on improving on my weaker sections. So I realized that VRC was my strong section. So I need to capitalize on DILR, which was my weaker section. And CAT के prep से मुझे बहुत help हुआ with GMAT as well, because VRC was my strong suit and GMAT is completely VRC heavy, right? GMAT के quant is very easy. So somebody who is preparing for CAT quant, they'll be easily able to ace the GMAT quant as well. So VRC was my strong suit and I was preparing for CAT. So that helped me in my GMAT examination as well. So that is how I ended up with my 98.6 percentile in CAT and 770 in GMAT. मेरा एक और क्वेश्चन है. आई मीन आपने स्पेसिफाई किया, आई थिंक दिस वी डिडंट डिस्कस अर्लियर, कि आपने 4 अटेम्प्ट दिए कैट में. एंड आई थिंक पहले अटेम्प्ट में 94 परसेंटाइल भी जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खराब परसेंटाइल नहीं होगा. डेफिनेटली आपको कई सारे बेबी आईएम से, नए आईएम से कॉल्स आए होंगे और कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस के भी ऑप्शन होंगे. तो व्हाट मेड यू थिंक दैट आई मीन दिस इज नॉट सैटिस्फाइड, आई विल रीअटेम्प्ट? फिर दूसरी बार रीअटेम्प्ट देने के बाद भी वो परसेंटाइल कम नहीं था. तो व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं मुझे दोबारा रीअटेम्प्ट करना चाहिए? या सो मैंने मैम मेरे हर अटेम्प्ट्स में बहुत सारे कॉलेज कन्वर्ट होते थे, राइट? एज यू राइटली मेंशन दैट मेरे बेबी आईएम्स कन्वर्ट हुए थे, मेरे न्यू आईएम्स कन्वर्ट हुए थे. आई कन्वर्टेड आईएम शिलोंग, एमडीआई गुड़गांव ऑन माय सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स एज वेल. बट मैम मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि अगर MBA करना है तो आई विल डू इट फॉर टॉप स्कूल ओनली, अ टॉप 10 स्कूल ओनली, बिकॉज माय अंडरग्रेजुएट वाज नॉट फ्रॉम अ टॉप टियर इंजीनियरिंग कॉलेज. सो आई हैड दिस नोशन इन माय माइंड कि करना है तो आई विल डू इट फ्रॉम अ टॉप टियर स्कूल ओनली, टॉप 5, टॉप 10, एंड इट शुड also be able to supplement my aspiration of being a consultant. I wanted to venture into consulting. So जिस कॉलेज में जहाँ भी अच्छे consulting firms आएंगे, that is the number one priority I had. Plus the second priority was I need to do it from a top tier school. So that's why I kept on leaving the options that I used to get from my previous course, and I ended up settling with SP Jain. Not settling, to be honest, I was happy with my admit at SP Jain. And what other, colleges gave you call with 98 percentile? I mean, definitely GMAT के through you must have applied for other colleges also. So, और कौन से colleges? GMAT through I did not. Yes. No, GMAT के through I did not apply to any other B school. Outside the country, I only applied to ISB and SP JMR. ISB did not happen. I had interview calls from ISB twice, but I was not able to convert it. I had a wait list, and eventually I was not able to convert it. When I joined SP JMR, I again applied to ISB. I had this notion that if I convert ISB, I'll leave SP JMR midway. Even after joining there, even after completing 1 year, I had this notion that if I convert ISB, I'll maybe leave SP JMR for ISB. But I converted ISB at that time as well. But then I realized that it was a huge opportunity cost for me. ISB is going to be very, very expensive as well. Fees was 45 lakhs के आसपास fees है, right? And I've already invested 10 odd lakh rupees at in my first year at SP JMR. So I decided, yes, let's stick to SP JMR and let's make the best out of it. And it turned out to be a great thing for me. ठीक है. तो एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया is like you applied for 2 colleges, that is ISB and SP Jain, right? And यहाँ पे आपने एक चीज स्पेसिफाई की that initially you was not able to make it to ISB. जो आपका प्रोफाइल है, what I was going through, you have a decent profile, ठीक है, एक्सपीरियंस भी है, मतलब उसका वेटेज भी है, एंड जिस कंपनी के साथ यू वर्क, I think बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए that is also among top preferred companies. उसके साथ साथ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज, राइट, एकेडमिक वाइज भी डिसेंट. तो व्हाट डू यू थिंक, हम वैसे कई बार बोलते हैं दैट टॉकिंग अबाउट MBA कॉलेजेस, इट्स नॉट ओनली कैट का परसेंटाइल, इट्स उसके बाद भी स्टेप है. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मेड यू टू SP Jain? क्या डूज थे, क्या डोंट्स थे? बिकॉज कैट के लिए सभी को पता है कि ठीक है मुझे 98, 99, 99.99 परसेंटाइल लेकर आना है, बट ये जो चीजें हैं ये उतनी ज्यादा डिस्कवर्ड नहीं है. लोग बहुत जेनरिकली में बात करते हैं कि ठीक है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, या फिर आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, बट फिर भी देयर इज लाइक काफी ज्यादा ग्रे जोन है. तो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? So, ma'am, to be honest, the only thing that did not help me get into
ISB was my lack of clarity of why I wanted to do an MBA at that time. So I had this discussion with the people who interviewed me, and the feedback जो उन्होंने मुझे दिया वो यही था कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आपको MBA क्यों करना है. It is very very important for a fast paced program at ISB, because ISB में आपको जाते ही within 3 months you would have your placements, right? So having that clarity कि आपको MBA क्यों करना है would really people at ISB is going to help you get the employment as well, the employment services team, the placement services team, right? So why MBA and why ISB is something which was not very clear to me at the time, and that led to my rejections twice at ISB. What helped me at my interviews for SP JMR and other B schools is post those rejections at ISB, I had this clarity कि मुझे क्यों करना है MBA, right? I was very convoluted with my thought कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी करना है, मुझे कंसल्टिंग भी करना है, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर लेते हैं, कंसल्टिंग कर लेते हैं, राइट? देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट हर एक बी स्कूल का क्या यूएसपी है, व्हाट इज एसपी जेएमआर ऑफरिंग मी, व्हाट इज आई एम कोडिकोड ऑफरिंग मी, राइट? एंड हाउ आई कैन लेवरेज दैट पर्टिकुलर थिंग. सो वो चीजें मिसिंग थी मेरे में, मैम. एंड मेरे को बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, मुझे बहुत लोगों से टेक्स्ट आते हैं कि एक जो टिप आप दे सकते हो मुझे कि इससे मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, इसकी आप कैट के साथ, जीमैट के साथ अपनी क्लैरिटी इंप्रूव करना स्टार्ट करो कि आपको एमबीए करना क्यों है, राइट? आपको एमबीए क्यों करना है, व्हाई एमबीए, व्हाट्स योर पोस्ट एमबीए गोल, आपको क्या अचीव करना है एमबीए से, एंड इज द बी स्कूल दैट आई एम अप्लाइंग टू, विल इट बी एबल टू हेल्प मी अचीव दैट पर्टिकुलर गोल. सो ये 3 चीज अगर क्लैरिटी आपके पास है अलॉन्ग विद गुड स्कोर, तो आपके चांसेस बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं फॉर कन्वर्टिंग दैट स्कूल, इज व्हाट आई रियलाइज. ओके, so moving to next set of questions is आपने पास आउट किया है in the year 24, ठीक है? बहुत ज़्यादा rumors, IIT Bombay, IIM Lucknow reached out to their alumni for placing their students. I mean, every single college struggled. And जब हम MBA की बात करते हैं, I mean, you're making a huge investment also. It's not like कि ठीक है फीस बहुत कम है तो अगर थोड़ा सा packages wise भी compromise होगा तो we can just go for it. So, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले तो कैसा एक्सपीरियंस था 2024? क्या सही में जितना हम ऑनलाइन आउटबर्स्ट देख रहे थे anonymously स्टूडेंट्स के थ्रू की ठीक है प्लेसमेंट सारे कॉलेजेस सफर कर रहे हैं, राइट फ्रॉम टियर 1 टू टियर 2 टू टियर 3 कॉलेजेस, वो था क्या सिचुएशन? मैम टू बी ऑनेस्ट प्रॉब्लम तो थे, ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं थे. सम सेक्टर्स वर स्ट्रगलिंग, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सेक्टर. वहाँ पे कंपनीज वेर ऑन अ हायरिंग फ्रीज, बट सम सेक्टर्स वर रियली डूइंग गुड. FMCG was really doing good. Consulting is still doing good. Consulting कई जगह स्ट्रगल कर रहा है, कुछ कंपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली MBB स्ट्रगल कर रहे हैं because they have a lot of strategy based project which is currently less in India. But apart from that, I think it was more or less good only, not that bad. I mean, the amount of bad that we see on internet, it's not that bad. मेरा एक और क्वेश्चन है उत्कर्ष कि ठीक है ये तो आपने एड्रेस कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि क्या MBA सही में बहुत है, बिकॉज अब जो टाइम आ रहा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्टार्ट ऑफरिंग दी शॉर्ट टर्म कोर्सेज, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, चैट GPT आया, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई, इंजीनियरिंग की तरफ से भी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वेव ऑफ हुए बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट. तो स्टूडेंट के माइंड में आता है whether you go to any kind, because हर स्टूडेंट is not possible कि they are able to make it to only top colleges, right? सीट्स कम है और हर स्टूडेंट स्कोर वाइज उतना कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है. पर क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम यही है कि क्या सही में MBA वर्थ है? अगर हम अभी की बात करें, हम फ्यूचर की बात करें, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स एस्पायर कर रहे हैं, कैट देने वाले हैं 24 में या 25 में. सो यू बीइंग देयर इन द इंडस्ट्री फॉर 3 years prior to your MBA, and then you recently also joined same sort of company, profile थोड़ी सी different है. तो what is your thought? मेरे हिसाब से तो MBA बिल्कुल वर्थ इट है. I'll give you 5 reasons कि क्यों worth it है. First कि the platform that MBA has to offer. I mean the type of alumni base, the type of connections, the type of faculty and the type of interactions that you get at a B school is unparalleled, to be honest. You will not get that कहीं भी. आपको उस तरह के interaction professors से या alumni members से, senior alumni members से वो कहीं नहीं मिलेगा आपको. That is one thing. Second thing, the type of opportunities that they offer. जो placement या जो भी opportunities
बी इट लाइफ प्रोजेक्ट, बी इट इंटर्नशिप्स, एक बी स्कूल से मिल पाते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, राइट? बी सम कंपनीज हैव दिस क्राइटेरिया कि दे रिक्रूट ओनली फ्रॉम लेट्स से आई एम एबीसी, SRI जमशेदपुर, SP JMR, ISB, राइट? सो एक प्रॉब्लम हो जाती है if you are not from a top tier B school, right? So a top tier B school bridges that gap as well between the industry and the candidate. Third thing is the kind of exposure that they give. They'll give you, let's say, different opportunities to be a part of case competitions, directly interact with leadership team from different organizations, do some social impact work, go for international immersions in different countries, Europe, US, see the business, see the employment there as well. So ये सारी चीजें भी B school आपको provide करती है. Again, this is not available for everybody. बट अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो एक्सेस आपको मिलता है, राइट? एंड द काइंड ऑफ कनेक्शंस दैट यू क्रिएट इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, 2 साल का, जो आपके साथ लोग निकलते हैं, दे एंड अप ज्वाइनिंग टॉप कंपनीज सच एज लेट्स से मैकेंजी, BCG, Bain, Amazon, Flipkart, you name all the companies, right? So you are directly in connect with those folks. So if you get any opportunities in the future, if they get any opportunities in the future, they can directly give you a referral or maybe help you with the employment opportunity there as well, right? So I think all these things really make an impact मेरे हिसाब से, and ये सबके लिए accessible नहीं है, ये उन्हीं के लिए accessible है जो कि एक MBA रूप से जाते हैं. Plus the learning, people say that कि you can learn it from Coursera or different courses YouTube से. I know कि आप कर सकते हो, बट MBA में आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मिलती है. आप जो सीखते हो उसे आपको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो कि सेल्फ लर्निंग में मिसिंग होती है, राइट? सो आई थिंक दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी को अपने करियर ट्रेजेक्ट्री में, इफ दे आर फीलिंग स्टक, इफ दे वांट टू मेक अ करियर शिफ्ट, इफ दे वांट टू मेक अ सेक्टर इंडस्ट्री शिफ्ट, उनके लिए MBA इज वेरी वेरी बेनिफिशियल. मेरा एक और क्वेश्चन है, which is not relevant to college or any of your experience, but हम जब भी ये टॉप कॉलेजेस देखते हैं तो वी सी कि अच्छा जो एवरेज पैकेज है वो 34 लाख का, या अगर हम मीडियम पैकेज भी देखते हैं तो 32-33 लाख समथिंग विच इज मेंशन. बहुत सारे एस्पिरेंट्स आज भी ये सोचते हैं दैट 34 लाख का पैकेज, दैट मींस 34 डिवाइडेड बाय 12, राइट? दैट इज द इनहैंस सैलरी व्हाट विल बी गेटिंग. या फिर 50 लाख मतलब 50 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो जो आता है दैट इज योर मंथली इनहैंस सैलरी. So for this short video, I just want you to bifurcate कि अगर किसी कॉलेज का लेट्स से 33 लाख का मीडियन पैकेज है, दैट मींस एक स्टूडेंट को अगर 33-34 लाख रुपए मिल रहा है ईयरली पैकेज कंपनी जो ऑफर कर रही है, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी, तो उसको फिक्स कितना कॉम्पोनेंट होगा, एक रफ आइडिया, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज़ हर केस में ये वेरी करता है, एंड वो कितना एक इनहैंस सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है. So ma'am, again, this depends on industry to industry as well. Generally, product companies में the ESOP or the variable part is bigger, right? So 50% almost वो ESOP या फिर आपका bonus part होगा in product companies. In consulting companies, mostly it's a fixed package only, right? 80-90% would be your fixed package and 10-15% would be your performance-based compensation. And सिमिलरली FMCG में भी आपका ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, राइट? यू वुड हैव सम जॉइनिंग बोनस एज वेल, बट मोस्टली इट वुड बी अ कैश कंपोनेंट इन कंसल्टिंग. प्रोडक्ट कंपनीज, द ESOP एंड योर वेरिएबल पार्ट वुड बी हायर, राइट? सो इन जनरल अगर आप बोल के there's this hidden rule to calculate your fixed component. You divide your entire CTC into 0.7 or 0.75, and you would see your in-hand salary that you will take, and then you can deduct the taxes and all to get your per month package. Now, one more question what I have is कि already आपने 3 साल काम किया है, you know how industry works. ऐसा क्या डिफरेंट था जो आपने अपने 2 साल के MBA में सीखा, जो आपको लगता है कि जितना इन्वेस्टमेंट ऑल दीज कॉलेजेस चार्ज, आई मीन हमारे दूसरे इंजीनियरिंग में अगर हम IITs की बात करें, NITs की बात करें, वहाँ की फीस कम है, बट इवन अगर हम MBA में गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ले लें, IIMs भी ले लें, IIT, तो दे ऑल आर एक्सपेंसिव. सो वो क्या डिफरेंशिएटर है? पहला तो मैम मैंने जो आपको बताया कि मुझे मल्टीपल फंक्शंस का आइडिया था. मुझे फाइनेंस का जीरो आइडिया था, टू बी ऑनेस्ट. फाइनेंस मुझे बिल्कुल नहीं पता था. आई रफली न्यू अबाउट मार्केटिंग एंड सेल्स, बट मुझे रियल टाइम एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था मार्केटिंग एंड सेल्स का. ऑपरेशंस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था. आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ पीपल हु यूज्ड टू स्टडी HR
बट HR एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की रियल इंपॉर्टेंस मुझे मेरे MBA में मालूम चली. सो मल्टीपल फंक्शंस का आइडिया तो बिल्कुल ही हुआ. सेकेंड वॉज द काइंड ऑफ let's say the opportunities in terms of I stayed in US for 1.5 months. So मुझे मेरे कॉलेज ने मुझे डेढ़ महीने के लिए US भेजा था. And I did a small social internship in Dhaka, Bangladesh with the Nobel laureate Mohammed Yunus. राइट. सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे रियल लाइफ में नहीं मिल पाती अगर मैं MBA नहीं करना चाहता. स्टडिंग इन US यूनिवर्सिटी, knowing about multiple functions, doing a social internship with the Nobel laureate, right? ये सारे मेरे लिए यूएसपी थे मेरी MBA के लिए, MBA की. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली वो मुझे कभी एक्सेसिबल नहीं हो पाती. I got a chance to interview with top tier consulting firms such as BCG, Carney, Accenture Strategy, which were not accessible to common folks. So I think इंडस्ट्री से हटके मुझे यही सब मिला मैम. मेरा एक और ये भी क्वेश्चन है कि सारे कॉलेजेस, आप कोई सा भी कॉलेज ले लो, इंडिया के नंबर 1 कॉलेज से कोई कॉलेज लेट्स से 1000 पोजीशन पे है, सब कॉलेज अपनी वेबसाइट पे हाईलाइट करते हैं 100% प्लेसमेंट, राइट? एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग, बिकॉज अगर किसी बच्चे का 50% भी है एंड दे जस्ट गिव अस अ कॉल, मैम प्लीज आप बता दो कि 100% प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस कौन से हैं. कंसर्न क्या है कि 100% चीजें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होते हैं जो विजिबल नहीं होते. टॉकिंग अबाउट ऑल दीज कॉलेजेस, जैसे यू स्टडीड एट SP Jain, वहाँ पे यू हैव ऑल दीज टॉप फोक्स, राइट? कंपटीशन भी जो है वो अलग लेवल का है, बिकॉज यू नो एवरीबडी आर यू नो देयर बेस्ट, यू नो किसी ना किसी स्ट्रीम से आए हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड. तो what do you think? You know, what do you want to say on this 100% placement thing? What is your thought after completing your MBA? Sure, ma'am. So honestly, again, I'm using honestly term because there is some malignity in these schools and the reports that they publish. But SPJMR is very, very honest with its report. When they claim it's 100%, it's 100% for us. There are multiple reasons because it's true. Because we have a very small batch size as well. At SPJMR, our batch size was 300. Right? 300 का batch size comparatively छोटा होता है. Generally in IIMs you would see a batch size of 450, 500, 550 and even 600 as well in some B schools, right? So we have a smaller batch size, so it is comparatively easier to place a smaller batch size as compared to, let's say, a bigger batch size. So yes, problems हर जगह होती हैं. There are, I mean, some people are. I have had some interactions with people from different B schools in which they say that they were told to opt out of placement because of multiple reasons, right? And then they say that eligible students X, right? Total students Y, and all eligible students are placed, right? And the X and Y are different, right? Eligible and total students are different, right? So people, I mean, B schools do manipulate the report, right? They add a lot of things. I was going through one B school report in which they added the international compensation in the average as well. Let's say they convert the international compensation to INR, then definitely the average will go up, right? So कुछ manipulations करती हैं B schools, but at SPJMR I can I mean say for sure that there was like full discretion on honesty, and we actually saw our batch getting 100% placed. I think we made a last set of questions there. You worked with Deloitte, right? Sure. So the profile was different. You itself specified that आपने और भी जो टॉप कंसल्टिंग फर्म है जो आप एस्पायर कर रहे थे, जो आप MBA करने आपने ज्वाइन किया था, उनको भी आपने इंटरव्यू दिया हुआ है. एंड what made you think कि ठीक है, I have to go with Deloitte as an offer? And I don't know, you know, whether you was able to make it to other consulting firms. अगर you was able to make it, so why you choose Deloitte specifically? Secondly, अगर नहीं हुआ तो what do you think, you know, what went wrong? So that, you know, अगर students किसी कॉलेज अच्छे कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो उनको पहले से ही पता है कि उन्हें कैसे वो 2 साल मैक्सिमाइज करने, कैसे प्रिपेयर करना है, so that if they are specifically targeting, let's say उन्हें अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है या कंसल्टिंग में जाना है या फिर FMCG में जाना है, तो उस हिसाब से अपने आप को 2 साल प्रिपेयर ब्रश अप कर सकते हैं. So, ma'am, again, वो clarity is very important that why do you want to go for an MBA? I had this clarity in my mind कि मुझे consulting करना है post my MBA, that to a client-facing front-end consulting. Regarding why I chose Deloitte, because Deloitte के बारे में मुझे पहले ही पता था कि Deloitte क्या है, उसकी work culture कैसी है,
काम कैसे करते हैं वो लोग, तो ये दिमाग में था ही. बट अ गुड थिंग दैट हैपेंड इज कि डिलॉयट ने ये इंटरनेशनल प्रोफाइल खोली हमारे कॉलेज में आके, कि वी आर प्रोवाइडिंग दिस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी इन विच यू कैन मूव टू साउथ ईस्ट एशिया, इन मलेशिया, सिंगापुर एंड other countries such as Philippines as well, right? And it was the second company that came for consulting for our final interview, right? So that's why I interviewed with one firm, which was Carney, before Deloitte, and Carney did not take me. They only took very few folks. It was a, I mean, if I could say, they took one guy. Okay, right? So they did not take me. Right. So that is how Carney did not happen, and then Deloitte happened. And as soon as it happened, I was out of the process, because you can only sit for one company, one of the dream companies that you've opted for. Right. So that is how Deloitte happened. And yes, I mean, people aspiring to, let's say, have a career in finance, let's say investment banking, private equity, venture capital, or product management, or FMCG, in marketing, sales, operations, whatever it be, they need to be very sure that this is a path that they want to take, because once they enter into that path, उनके पास लीवे बहुत कम होती है, right? Somebody who is in marketing and sales, they can shift to consulting, थोड़ा time लगता है, right? Similarly, somebody who is in consulting, they can shift to another field, but उन्हें कुछ experience लेना पड़ता है, right? So अगर आपके पास वो श्योरिटी है, तो आपकी सेलिंग बेटर हो जाती है, आपकी प्रिपरेशन बेटर हो जाती है, एंड यू कैन शोकेस दैट टू योर इंटरव्यूअर एज वेल. तो आई थिंक वो क्लैरिटी होना इज समथिंग विच इज द की फॉर मी, एंड दैट हेल्प मी गेट ऑल द शॉर्टलिस्ट एज वेल. मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन कि आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो भी ये वीडियो को देखेंगे चैनल पे. सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आई थिंक स्किप कर गई. यू स्पेसिफाइड अबाउट योर ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम, जहाँ इसको आपने ऐसे भी स्पेसिफाई किया कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज वेरी फ्यू स्टूडेंट्स गेट, और क्या हेल्प होती है, बिकॉज यू नो बहुत सारे कॉलेजेस हैविंग दिस ऑप्शन जहाँ पे स्टूडेंट कैन ऑप्ट कि ठीक है आप कुछ महीनों के लिए, सम कॉलेज इवन हैव 6 मंथ प्रोग्राम कि आप अब्रॉड जाके कर सकते हो. तो व्हाट डू यू थिंक, यू नो, ये दो पहले तो यू नो ये कैसे हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है. सेकेंडली, व्हाट इज द लास्ट सजेशन यू वांट टू गिव? श्योर मैम. सो आई टेक द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, कि कैसे ये हेल्प करता है. सो बेसिकली एसपी जेएमआर का एक ग्लोबल फास्ट ट्रैक प्रोग्राम ऑलरेडी है इन प्लेस. दिस पार्ट ऑफ द करिकुलम दैट दे हैव, everybody has to go through it. Now they have started giving an opt out, I think, because as you mentioned कि fees का issue हो जाता है, not everybody can afford it, but it was a mandatory thing for us. And the tie-ups that they have are very good. So they had a tie-up with Michigan State University in US. They have a tie-up with ISADE in Spain, right? So ये सारे tie-ups बहुत ही important है. You go there, you understand culture, you do some industry visits. वहाँ पे हम जाके we interacted with the students of Michigan State University. We interacted with company corporate professionals in US. So हमारी understanding international business के बारे में बहुत enhance हो गई, right? कि कैसा working conditions है, working culture है US में, right? If somebody wants to go to US, let's say 3-5 years down the line, they would have some clarity कि हाँ हमने 1.5 months spend किया था during our immersion, and हमारी ये clarity, and I think हम जा सकते हैं अगर हमें जाने का opportunity मिला US, right? So that gives you a clarity कि आप ये कर सकते हो with that particular 2.5 months stint. एक और चीज ये है कि आपको एक बहुत ही वाइड व्यू मिलता है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, राइट? हमारी इंडियन कॉर्पोरेट्स बहुत डिपेंडेंट है यूएस पे और डिफरेंट कंट्रीज पे, राइट? सो वंस यू गो देयर, वंस यू विजिट दैट प्लेस, यू वुड नो कि कैसे वो लोग काम करें, हाउ इज दैट इम्पैक्टिंग आवर इकोनॉमी, आवर सेक्टर एज वेल, राइट? सो वो भी आउटलुक एक मिल जाता है इफ यू डू इंटरनेशनल विजिट्स लाइक दीज, राइट? So that is, I think, that was very, very helpful for me. I got to visit New York, I visited Chicago, I visited Washington DC. So एक तो मुझे cultural immersion मिल गया, लोगों से मिलने का मौका मिला, दूसरा मुझे industry outlook मिल गया. So that's very, very helpful. Now the suggestion that I want to give to anybody who is aspiring to go for an MBA or wants to have a career in consulting is to again first have clarity of why do they want to go for an MBA, because this question is definitely going to come in front of them during the interview, right? Have that clarity, focus on your entrance examinations, but do not get lazy once you have your score, right? Start preparing for your interviews as well, start understanding what the college has to offer, read about the college, read about the key people at the college, the program that you're applying to, right? And also have some clarity of what you want to do post your MBA.
right? Whether you want to be in consulting, whether you want to go to marketing and sales, finance, etc. Have some clarity. And once you have that clarity, start preparing for that particular sector as well, particular industry as well. Let's say you are interested in finance, right? Then you would expect some questions of finance in your interview as well. You would have some questions of corporate finance, accounting in your interview as well. Similarly, if you say consulting, make sure you know about consulting. Make sure you have some idea about how to solve guesstimates, case, etc. Right? So have some understanding of what kind of questions, what kind of interview questions could be asked for that particular sector as well. Right? And keep on giving mocks, keep on interacting with people, keep on interacting with alumni of that particular B school that you're targeting. That also gives you a lot of understanding of what you want to do. I think, Karsh, thank you so much for your time. I'm done with my questions, right? And मुझे तो बहुत मजा आया. Definitely, you know, ये video जब चलेगा तो it will help a lot of students. And best of luck Thank for you your so much, future, right? And yeah, thank you. Thank you so much. Yeah.